हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है। In my previous class, we have already completed the origin of strategies, scope and importance of strategies. What are the We have also completed the scope of an organization. We have also completed the nature of strategic managements, strategic decision making. What are the levels of strategies, role of strategist? Now, today, one of the most important topic that we will going to discuss is need for strategies and strategic management. Need for strategies and strategic management. We will going to start this. Okay, need for strategies and strategic management. What is the need for strategy? Why we need to means implement the strategy? What are the procedures to implement the strategies? We will going to discuss. Those in favor of setting strategies argue that strategies are needed to give companies direction. Without strategies incorporating objectives, companies would be adrift. Okay, if companies do not decide whether they want to go any direction and any activity is fine, then the people in companies would not know what they were working towards, and therefore would not be able to judge what constitute effective managerial behavior of that particular company is all about. इसका मतलब क्या है? आप जो भी कंपनीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडस्ट्रीज या फिर जो भी आईटी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उस सेक्टर का कोई मोटिव, स्ट्रेटजीज, प्लान, गोल, ये सारा कुछ होना चाहिए. Otherwise, what will happen? The employees working there, maybe in IT sector, maybe in any organization, they fail to recognize why they join this company, what is the motto of this, what is the motto or goal orientation of this particular company. They will remain in confused, and for this the company will never ever going to cross those boundaries where they can earn the reputation as well as the profit. In this managerial economics, or in this managerial strategy behavior, in this managerial behavior, one of the most prior aspect of any companies is to set the strategies, or they should have the clear perspective from their point of view, from the company's point of view. ठीक है. नाउ दूसरा देखो, however those not in favor argue that direction setting strategies can also block out peripheral vision, keeping companies sharply yet myopically focused on one course of mm, action. Okay. However, those not in favor argue that direction setting strategies can also block out peripheral vision, keeping companies sharply yet myopically focused on one course of and threats, and these unfold to deviate from set course as the company interact with its environmental and learns. यहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स का या फिर नीड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज का एक और ड्रॉबैक्स के बारे में बता रहा है. क्या बता रहा है? कि सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन फोकस ओनली ऑन सिंगल goal, only focused on any single means area on sector that they want to explore, or they want to they want to means exercise इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो वो कंपनीज क्या होता है, दूसरी जगह से वो फिर डिटोरॉइट कर जाता है. मैंने जो एग्जांपल्स आपका नोकिया का दिया था, इससे पहले जब मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर इससे पहले जो भी मैंने पेपर लिया था, उसमें मैंने आई हैव टोल्ड यू और आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोकिया. नोकिया वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड और वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से इमर्जिंग कंपनी, मोबाइल
in that era, in the 90s, in the 20s era, but they focused only on the what you can say, callings. They focused only on what you can say, uh, the signal and all. They focused only on this, but they never focused on the technologies. They never focused on the lookings or looks of their mobile phone, and that is why apart they actually apart from that, and that is because of this they fall down from the market. ओके, उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किया था, एक ही जगह कि हमारा सिग्नल अच्छा मिलना चाहिए, हैंडसेट जो मोड है वो यही सेट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, सेट हार्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, सब कोई पॉकेट में कैरी कर सकता है, ऐसा कुछ मतलब उनका मोटो था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही जगह पर अपना जो है सारा फोकस, अपना जो भी सारा एसेट, अपना सारा गोल स्ट्रेटेजीज एक ही जगह पर लगवाया था। एंड उन्होंने भूल गया था कि अपार्ट फ्रॉम दिस, if the generations change, if the tastes change, then definitely the market or the grip they are holding in the market, that will also going to loosen. उन्होंने ये चीज पे ख्याल नहीं दिया, उन्होंने डेकोरेशंस पे ख्याल नहीं दिया, उन्होंने डिस्प्ले पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लुक्स पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मार्केट धीरे धीरे नोकिया का पूरा कोलैप्स हो गया। ओके, तो ये यहां पर ये बता रहा है कि ओनली फोकसिंग, द कंपनी नॉट ओनली फोकस only one aspect of their areas, they should also focus on different sectors of their areas, then only they can grow. Am I clear? Now strategists hit back arguing that early commitment to a course of action is highly beneficial. By setting objectives and drawing up a strategy to accomplish these, companies can invest resources, train people, building up production capacity, and take a dear position within their environment. Strategies allow companies to mobilize themselves and to dare to take actions that are difficult to reverse and have a lot of payback period. We need to point out that commitment has a flip side, flexibility, especially when mechanism to change our course midway are not in place. The absence of the strategies does give the company flexibility to easily easily change course. Strategic plan also has the benefit of coordinating all strategic initiative with a company into a single cohesive pattern. A company wide master strategy can ensure that differences of opinion are ironed out and one considered course of action is followed throughout the entire company, avoiding overlapping, conflicting, and contradictory behavior. But the flip side is that developing a master strategy may lead to the squashing of initiative, either proposally and inevidently. क्या बता रहा है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए, द पर्सन हु इज द एग्जीक्यूटिव्स हु आर स्ट्रेटेजिस्ट, हु आर द प्लानर्स in the company, they must arguing, they must go on arguing for early commitment to course of action is highly beneficial. देखो ये पहले लाइन से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, इफ नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग अस, देन वी आर इन ए रॉन्ग वे, वी आर इन अ फॉल्स वे, और वी आर इन ए रॉन्ग पाथ। हमेशा क्रिटिसाइज, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज होना चाहिए। ओके, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके ऑफिशियल लाइफ हो, देयर मस्ट बी क्रिटिसाइज, समवंस टू क्रिटिसाइज। अगर कोई इंसान का कुछ भी क्रिटिसाइजिंग या कुछ भी ऐसा कुछ ड्रॉबैक्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आदमी एक गलत दिशा पर जा रहा है। द सेम वे द स्ट्रेटेजिस्ट और द प्लानर्स, when they sit together
for a round table meeting for the beneficial of the companies, there must be some commitment, there must be some drawbacks, there must be some what you can say arguments in between the meetings. Then only we can get, or the companies can get some fruitful result from the arguments or from the strategist. इसका इसका एक और सीधा सा बात है, कोई इंसान अगर एकदम बिल्कुल सीधा है, जिसमें कोई दाग नहीं है, या फिर जिसका कोई मतलब एनिमीज नहीं है, या फिर जिसको कोई क्रिटिसाइज ही करता नहीं है, इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब वो इंसान गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा इंसान तो होता ही नहीं है। ठीक है। और ऐसा एक इंसान है जिसका मतलब इंसान उस तरह का गलत होता है। द सेम वे द कंपनीज में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जब अपना मीटिंग सेटअप करते हैं, तो वहां फॉर में अगेंस्ट में दोनों पक्षों को सुना जाता है। दोनों दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का जो पर्सपेक्टिव आइडियाज है, उनको लिया जाता है। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस निकलता है, उसमें एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तब जाके क्या होता है, वो एक फ्रूटफुल और गोल ओरिएंटेड रिजल्ट देता है। ओके। तो स्ट्रेटेजिस्ट को, द एग्जीक्यूटिव हु आर स्ट्रेटेजिस्ट, हु आर द प्लानर्स इन द कंपनी, दे मस्ट आर्ग्यू ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। By setting objectives and drawbacks up, drawing up a strategy to accomplish these, companies can invest resources, train people, build up production capacity, and take a dear position within their environment. Okay, strategies allow companies to mobilize themselves and to dare to take actions that are difficult to reverse, and have a long playback period. We need to point out that commitment has a flip side: inflexibility, especially when mechanism to charge to change course midway are not in place. The absence of strategies does not give the company flexibility to easily change course. This last line is very, very important in any company or in any company, any organization. If there is no strategist, if there is no plan, if there is no implementation of a plan, of there is no implementation of strategies, then that particular company or organizations will fail to go for a long run. Am I clear? So that is why strategic plan also have a benefit for coordinating all strategic initiatives with a company into a single cohesive pattern. इसीलिए ये कहा जाता है, जो प्लानर होता है, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उनके तरफ से एक और बेनिफिट होता है कि उन्होंने, उनका क्या होता है कि वो हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करके ही अपना प्लान के बारे में बताते हैं। Every strategist who are planners, who are making a plan, okay, they always try to coordinate within themselves. मैंने ये प्लान तैयार किया है, मैंने ये प्रेजेंटेशंस तैयार किया है, मुझे इस तरह से अपना प्रेजेंटेशंस बोलना चाहिए। ठीक है। they always ready with their strategies. Okay, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर मिलता है कि आप जान पाते हो कि क्या कैसा प्लानिंग किया गया है। ओके, a company wider master strategy can ensure that differences of opinion are ironed out and one consistent course of action is followed throughout the entire company. Okay, ये बता रहा है कि एक कंपनी with a good strategies can ensure that the differences in the opinion must ironed out. Ironed out क्या है? एक फ्रेज है, फ्रेज है जो बोलता है ना, जंग दिमाग में जंग पड़ा हुआ है, उसको हटाओ, साफ करो, तो दैट इज कॉल्ड आयरन फेज, दैट इज कॉल्ड आयरन आउट। ठीक है। दिमाग में जो जंग भरा हुआ है, उसको क्लियर करना, इसे आयरन आउट कहते हैं। ये एक इंग्लिश फ्रेज है। आयरन आउट का मतलब होता है जो भी कमिटमेंट्स या जो भी आप नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स आपके कंपनीज में जो भी एग्जीक्यूटिव में है, जब भी वो मीटिंग या स्ट्रेटेजीज तैयार करते हैं, उस चीज को आप वाइप आउट कर दीजिए। यू मस्ट रिमूव और यू मस्ट आयरन आउट ऑल दोज नेगेटिव दैट हैविंग दैट यू हैव in your mind before
preparing any strategies. Okay, now उसके बाद क्या बता रहा है? A company wide muster and ensure the company wide overlapping action is followed by throughout the entire company, avoiding overlapping and conflicting and contradictory behavior. But the flip side is that developing a master strategy may lead to the squashing of initiative either purposely and inevitably. इसका मतलब क्या है? The person who is making a strategy or who's planning a strategy may lead to squashing or initiative either purposely or inevitably. जो प्लानिंग या जो लास्ट में अपना प्लान बताते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनका काम होता है जितने भी नेगेटिव या जितने भी प्रोज एंड कॉन्स आपके पास स्ट्रेटेजीज आया है, उसको स्क्वैश आउट करके, उसका निचोड़ निकाल के, उसका जो असली जो मुद्दा है या असली जो उसका एक सिनेरियो बनता है, आप उस सिनेरियो पे काम कीजिए. सो दिस इज द मेन importance, or you can say these are the need for strategic management. Okay, now the debate between support. Okay, ये तो हो गया. Now this the next one is, what is the need for strategic management? What is the importance of strategic management? Strategic management का importance क्या है? देखो, first of all, formal versus informal process. The next one is differentiated versus integrated task. The third one is, okay, no, only 2 points are giving. Okay, number one is formal versus informal. Formal versus informal. Madhusmita, am I audible? Yes, Hello. sir. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड है, थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा रुको. कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है कॉलेज से, थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ प्लीज. हाँ, Okay, sir. प्लीज.
Hello, 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 hello. ठीक है. Okay. Where we are on the needs of the strategies. Na? We are going with the needs for the strategic management. So the needs of the strategic management. The first point is formal versus informal process. The first one is formal versus informal process. So before we start this point, we want to discuss this point. I want to state that what are the strategic management is all about. Why the management and strategic, the two related correlated word been used here. Management itself is a strategy. Means if you are doing anything, if you're working in a company, means you need to manage. तो स्ट्रेटेजीज और मैनेजमेंट दोनों का यहाँ पर क्या इक्वेशन बैठ सकता है. देखो लिखा है यहाँ पर. We can argue that strategy formation by means of strategic management lends itself well to formalization. By its very nature, strategic management is very structured and sequential activity. Okay, and therefore can readily organized by employing formal procedures. Extensive formalization can culminate in the establishment of a strategic management system. In such a system, strategy formation steps can be scheduled, task specified, responsibilities assigned, decision making authority clarified, budget allocated, and control mechanism installed in strategic management. क्या बता रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? बता रहा है इट इज अ फॉर्मेशन दैट लेंड इटसेल्फ टू वेल formalization. It is very the management, it's a very structured and sequential activity. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत सिक्वेंशियल होता है और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उसे डिफाइन किया जाता है. ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उसे डिजाइन किया जाता है. And therefore can readily organized by employing formal procedures. और जिसकी वजह से बहुत फॉर्मल तरीके से उसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, some differences are there. Now extensive formalization can culminate in the
establishment of a strategic management system. क्या बता रहा है? एक्सटेंसिव फॉर्मलाइजेशन, एक्सटेंसिव जो फॉर्मलाइजेशन है वो कल्मिनेट इन द इस्टेब्लिशमेंट, in the establishment of strategic management system. Now, in such a system, strategic formation steps can be scheduled, task specified, responsibility assigned, decision making authority clarified, budget allocated and controlled mechanism installed. तो strategic management में किस areas में ये काम करते हैं? Where are the areas where the strategic management's role is being played? नंबर वन में होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द फॉर्मेशंस जो होता है वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शेड्यूल, टास्क स्पेसिफाइड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्लैरिफाइड, बजट्स एलोकेट एंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ये इतने तरीके में दीज आर द एरियाज और दीज आर द सेक्टर्स वेयर दिस व्हाट यू कैन से दिस फॉर्मेशंस इज बीइंग शेड्यूल्ड। Now, next is obviously everyone agrees that formal strategic management systems are worth instituting. Some regards them as a mixed blessing, while others are outright hostile. Some authors who value explicit strategies are not enthusiastic about formal strategic management. The debate between supporters and dictators of formal strategic management system resolved around two major tensions. दो मेजर टेंशंस में या दो मेजर सेक्टर्स में ये सबसे ज्यादा काम करते हैं. नंबर वन इज फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्रोसेस. Number one is formal versus informal process. What is the meaning of this? The advantage of formalization, according to advocates of the strategic management perspective, is that it structures and disciplines the strategy formation process. Formalization facilitates tighter company, unambiguous responsibilities, clearer accountability, and stricter review of performance. Stricter review of performance. Okay, this is the advantage of strategic management. Okay, these are the advantage of strategic management. The next one is what is the differentiated versus integrated task? What is the meaning of differentiated and integrated task? Integrated itself means some particular task, and differentiated means from those particular tasks how you differentiate or how you allocate your strategy to different areas. This is the basic difference between differentiated versus strategic integrated task. This is the basic difference between differentiated versus integrated task. देखो क्या लिखा है. Many advocates of strategic management perspective also believe that a division of labor within the strategic information processes is an important advantage of formal strategic management system. The most important split facilitated by strategic management system and the task of this is deciding which task should be implemented. Of course, of course, other specialized functions can also be created, such as strategic planners, competitive intelligence, analyst, new business developer, and controller. A major benefit of task differentiation is that the best managers are liberated from time consuming operational matter so that they can focus on strategic issues. ओके, तो ये क्या बता रहा है? मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाउ टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज, हाउ टू फॉर्मुलेट द प्लान. ओके,
Now, during formulation of the plan, the strategy should be implemented. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो भी स्ट्रेटेजी या प्लान आप तैयार कर रहे हो, वो सबसे पहले आपको उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू इंप्लीमेंट. आपने प्लानिंग कर दिया, लेकिन आपने उस प्लान में कोई काम ही नहीं किया. यू फेल टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स. ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज में नहीं होना चाहिए. बिजनेस स्ट्रेटेजीज में बता रहा है, जो भी प्लान्स या जो भी स्ट्रेटेजी आप तैयार कर रहे हो, आप किसी मतलब तुरंत आप उस पे एक्शंस लीजिए. आप उस प्लान को ट्राई कीजिए एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके. ऑफ कोर्स अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, सच एज स्ट्रेटेजिक प्लानर, competitive intelligence analyst, new business developer, and controller. New business developer and controller. A major benefit of task differentiation is that the best managers are liberated from time consuming operational matter so that they can focus on strategic issues. ये इसलिए जरूरी है. Why? Because you for time consuming operational, आपका टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने जो भी स्ट्रेटेजीज तैयार किए हैं वो नेक्स्ट लेवल में फेलियर होने का चांसेस सबसे ज्यादा है. इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये कहा जाता है, सबसे पहले आप जो है अपना टाइम कंज्यूम कम करना कीजिए. whatever the strategies you are preparing for operational matters, you need to be very much time oriented, नॉट टाइम कंज्यूमिंग. टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है, फॉर्मल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी यूज when some conditions are present and is difficult to use when the opposite is true. Okay. Therefore, not all proponents of explicit strategies are convinced of the need for formal planning system. In general, they argue that such extensive formalization creates bureaucracy and reduces top management's freedom from maneuver. Their presence is to retain a certain level of organizational flexibility despite the existence of strategic by keeping enough power in the hands of top management to push through a change of course on command. Okay. Within this background, let us turn our attention toward the structured process of strategic management, one that will retain enough flexibility and room of creativity for that is with all its books which concern. देखो, what are the nature and forces. नेचर एंड फोर्सेस में क्या बता रहा है, कंपनीज, पॉलिसी मेकिंग, ऑथोरिटियन, experienced in planning, democratic permissive, day to day operational thinker, intuitive thinkers, and inexperienced in planning. ये मैनेजमेंट का स्पेशल स्टाइल होना चाहिए. क्या? दे आर गुड पॉलिसी मेकिंग, दे शुड हैव अ गुड पॉलिसी मेकिंग, दे शुड हैव ऑथोरिटियन, they should have experienced while doing any planning, they should be democratic permissive. Okay. Means by the people, for the people, and of the people. Always think about the people. Okay. Day to day operational thinker. Every day you need, before coming, before joining any meetings or before closing the office, or any office and all, they must would have the operational thinker thinking. What is the operational thinking? What will be the next steps we're going to move? इसे कहते हैं ऑपरेशनल थिंकिंग. उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनवायरमेंट. उसमें क्या क्या आता है? स्टेबल एनवायरमेंट, लिटिल कंपटीशंस, सिंगल मार्केट एंड कस्टमर्स, turbulent environment, many markets and customers. Now, competitive serve. These are the complexity of the environment. Environment के accordingly अगर आप अपना कंपनीज को रन करते हो, तब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है
व्हाट आर द पाथ टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पाथ ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? The companies learn to do strategic management. From that word, strategic management in a company appears to evolve through four sequential phases according to Wallach, Kaufman, and Gluck, which is known in figure 1.1. Okay, what are who is Gluck, Kaufman, and Wallach 1982? These are the developers of planning. ठीक है. Now the next come to the one is basic financial planning. Basic financial planning किसे कहते हैं? Origins of formal planning system can be traced to an annual budgeting process where everything is reduced to a financial problem. Procedures are developed to forecast revenue, cost, and capital needs, and to identify limit for expense budgets on an annual basis. Information system reports on functional performance as compared with budgetary targets. Now, companies in phase one often have sound business strategies, but they rarely exist in a formalized manner. The only concentrate indicates that a business strategy exit may be a projected sales earning growth rate, occasionally qualified by certain debt, inequality, target, or other explicit financial objectives. Okay, so these are the business planning, financial, these are the basic financial planning. Okay, now the whole of the planning in this phase fall on the CEO and his top team. तो ये बता रहा है कि बिजनेस प्लानिंग या फिनेंशियल प्लानिंग कोई भी अगर करता है, सबसे पहले उस कंपनी का टॉप या चिप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होता है, वो सबसे पहले एक प्लान तैयार करता है. डू दे रियली नो देयर कंपनीज प्रोडक्ट एंड मार्केट एंड हैव अ गुड सेंस ऑफ व्हाट major competitors are doing and are expected to do? These are the questions that the chief executive officer must prepare before making any strategy. Good sense of market, good sense of product, company's product, market value, the competitors. ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें बिजनेस स्ट्रेटजीज में डिस्कशंस होते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है? बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर, कैन दे एस्टिमेट व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट और मार्केटिंग चेंज will be on their plans, their distribution systems, or their sales force. With this much knowledge in hand, they are not planning for business to grow beyond the traditional limit. They may not need to set up an expensive planning system. इस ये चार पॉइंट डिस्कस करने के बाद उनका क्या इंपैक्ट रहता है? दे व्हाट विल बी द सेल्स target, what will be the sales force, what will be the distribution system, what will be the planning of business to go for making profit. These are the next step after discussions on the strategy, knowledge, marketing, product and competition. ठीक है, देखो यहां पर ये जो पॉइंट्स है, ये हमें ये बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप वाइज एक कंपनीज का जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनका उनको कैसे डिसीजंस लेना होता है, कौन कौन से बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे, कौन से पॉइंट्स पे वो अपना डिसीजंस को इजहार करेंगे, कौन से पॉइंट्स पे वो डिसीजंस को अपना प्लानिंग जो है, स्ट्रेटजीज जो है
अपने एग्जीक्यूटिव जो रैंक के ऑफिसर्स है उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स होता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मार्केट, प्रोडक्ट्स, कंपटीशंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट में आता है सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड देन कम्स टू द नेक्स्ट, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है आप सेल्स कैसा रखोगे, सेल्स ग्रो कैसे करोगे, अपना बिजनेस को कैसे डेवलप करोगे। तो इस पॉइंट में हमने ये जाना कि कैसे बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फेज 2 में, फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। पहला होता है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा होता है फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। ये फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग क्या है? As the complexities increased, when companies became large, more explicit documentation of the implicitly understood strategies of phase 1 are required. The number of products and markets serve, the degree of technological sophistication required, and the complex economic system involved far exceed the intellectual grasp of any one manager or small group of managers. The problems start from financial planning. As treasurers struggle to estimate capital needs and trade off alternative financial plan, they and their staff extrapolate past trends and try to foresee the future impact of political, economical, and social forces. Thus, being a second phase forecast based planning, most long range of strategic planning today is a phase 2 system. Usually, at first, these planning differ from annual budgeting only in the length of its time frame, which is usually 3 to 5 years as compared to a year of phase 1. Very soon, however, the real world frustrate planners by previously varying from their forecast, throwing their estimation haywire. To handle this complexities, planners typically models and eventually computer stimulations models. These models help achieve some improvement, but it is not enough. Sooner or later, plan based on predictive model fail to signal major environmental shift that only not only appear obvious and the fact but also have a great and usually negative impact on corporate fortune. तो नेक्स्ट जो है फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग में ये बता रहा है द प्रॉब्लम स्टार्ट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले जब भी फाइनेंशियल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने घर के, हम लोग जो अपने घर में जब 30 तारीख के बाद जब पेमेंट मिलता है, हम जब घर के जितने भी खर्चे होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए बैठते हैं तो हमें वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलता है। तो फाइनेंशियल बेस्ड प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग में। क्यों? हम जब भी अपना बजट या फिर फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक्स या कुछ ना कुछ उसमें फॉल्स लू फॉल्स हमें डेफिनेटली मिलता है। As treasurers struggle to estimate capital needs and trade off alternative financial planning, the company's treasurer, जो अकाउंट्स या फिर देखते हैं, जो मनी फिनेंशियल को सेटअप करते हैं उनको ट्रेजरर कहते हैं। उनको सबसे ज्यादा मुश्किलें तब आती है जब जो प्लानिंग किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान वो फाइनेंशियल प्लान फेल हो जाता है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तब जाके सबसे बड़ा ट्रेजरर को यहां पर दिक्कतें होती है। The staff exploit first trend and try to foresee the future impact of political, economical, and social forces. Thus, begins a second phase, forecast based planning,
most long range of strategic planning today is phase टू सिस्टम. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज एक्सप्लॉयटेशन. ओके. Drop loo fall in the ratings of a production, fall in the marketing strategies, fall, there is a downfall in the planning, there is a downfall in the marketing growth. तो एक ट्रेजरर को इतने सारे जगह पर फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. दैट इज वाई फेज टू ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे टफ पार्ट होता है. तो फेज टू मैनेजमेंट होता क्या है, दैट इज प्लानिंग बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड प्लानिंग. फेज टू जो होता है कंपनीज का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है. पहला जो होता है बेसिक प्लानिंग होता है, फेज वन. फेज टू होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वन ऑफ द मोस्ट टफ टास्क टू इंप्लीमेंट. अब तक जो मैंने बताया है, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, एनी पॉइंट्स यू कुडंट अंडरस्टैंड? No, sir. Madhusmita, if you are audible, then please reply my answer. Do you have any doubt so far I have completed? No, Any sir. doubt? Any questions that coming to your mind that this is the point that is not clear to me? No. No, sir. Okay. Then it's all right. Tomorrow or whenever you have a class, we will going to start. Remember, we will going to start phase 3, that is externally oriented planning. Okay. Phase 3, externally oriented planning. We will going to start. Okay. Yes, sir. Chalo. Thank you. That's all of for today's class. Thank you, sir.